Hello students, today we are going to learn about simple past tense. Today we are going to learn about simple past tense. So what is simple past tense? The simple past tense tells us about actions which took place sometime in the past or talks about some past habitual action. The simple past tense tells us about actions which took place sometime in the past or talks about some past habitual action. Simple past tense हमें भूतकाल में किए गए कार्यों का बोध कराता है। कुछ बीते हुए जो हैबिचुअल एक्शंस हैं जो पास्ट टाइम में किया गया है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I went to the fair yesterday. I went to the fair yesterday. Fair means मेला. I went to the fair yesterday. मैं कल मेला गया था। Went here, went is the past form of go. Go का ये past form है went. Next, we usually studied in the library before exams. We usually studied in the library before exams. हम लोग एग्जाम के पहले लाइब्रेरी में पढ़ते थे। Here, studied is the past form of study. They met Mrs. Verma at the station. And in this sentence, the word met is the past form of meet, M-E-E-T, meet. ये meet का second form है, past form है met. So the words went, studied and met are in the simple past tense. They tell us about actions that took place sometime in the past. ये तीनों वर्ड्स अगर हम देखें, ये तीनों जो वर्ब्स हैं उनको देखकर हमें बताते हैं कि ये जो एक्शन किए गए हैं वे पास्ट टाइम में किए गए हैं। जो भी एक्शन है ये सारे पास्ट टेंस को शो कर रहा है। Like I went to the fair yesterday. Okay? They also tell us about some past habitual actions. ये हमें कुछ past time के habitual action को भी बताता है। Like we usually studied in the library before exams. एग्जाम के पहले हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे। Usually मतलब प्रायः पढ़ते थे। तो ये habitual action है जो कि past time में किया जाता था। Simple past tense. The simple past tense is formed when we add the suffix ed to the base verb. For example, the children jumped into the river. The simple past tense shows an action that happened in the past and is over now. It is also used to talk about a past habit. For example, he worked in Dubai last year. He exercised every day. Simple past tense हमें भूतकाल में किए गए कार्यों का बोध कराता है। भूतकाल मीन्स जो समय बीत गया है। Irregular verbs do not add ed. They take different forms. Like he ran last night. We wrote our notebooks. Irregular verbs में हम ed ऐड नहीं करते हैं। इनका फॉर्म चेंज हो जाता है पास्ट फॉर्म बनाते समय। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसे पास्ट टेंस बनाते समय उसमें हम सिंपल ed ऐड कर देते हैं तो वो पास्ट टेंस का फॉर्म बन जाता है। लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें हम ed ऐड नहीं कर सकते हैं, उनका वर्ड चेंज हो जाता है। लाइक ही रैन लास्ट नाइट,
We wrote our notebooks. In these sentences, the words ran and wrote are irregular verbs. So स्टूडेंट्स, हमने ये जाना कि सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल में किए गए कार्यों का बोध कराता है और सिंपल पास्ट टेंस बनाते समय हम उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। Fill in the blanks with the simple past tense forms of the verbs in brackets. Fill in the blanks with the simple past tense forms of the verbs in brackets. Few sentences are written and the verbs are given in brackets. These all verbs which are given in brackets are not in past forms. We have to change into past form. ये सारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं ब्रैकेट्स में ये पास्ट टेंस में नहीं है, इन्हें हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश द आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड द वर्ब इज नो, KNOW, नो। सो नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म न्यू, KNEW. So here it will be I knew the answer to that question. Next, the Indian team dashed the match and the verb is lose, LOSE, lose. So the past form of lose is loss, LOST, lost. Sorry, loss, LOST, loss. The Indian team lost the match. The Australian team dashed the match and the verb is win. So what is the past form of win? Won, WON, won. So here we will write won. The Australian team won the match. We dashed the sharp objects away from the baby's reach and the word is keep. So the past form of the word keep is kept, KEPT, kept. We kept the sharp objects away from the baby's reach. The fisherman dashed his boat and the word is row, ROW, row. So the past form of row is rowed, ROWED, rowed. So the sentence will be the fisherman rowed his boat. The bird dashed over the tree. Verb is fly. Past form of fly is flew, FLEW, flew. The bird flew over the tree. Father dashed a new bicycle for me and the verb is buy. Here we have to fill past form of buy. So the past form of buy will be bought. Father bought a new bicycle for me. The last sentence is the dog dashed Vani when she was playing with the puppies. Bite. Here we have to fill past form of bite. Bite means काटना. So past form of bite will be bit. The dog bit Vani when she was playing with the puppies. So students, we have filled these blanks with past form of the verbs which are given in brackets. The verbs given in brackets are in present form, present tense form, and we changed these verbs into simple past tense forms. Fill in the blanks with the simple past tense forms of the verbs in the box. Students, you can see the verbs are given in the box. इन verbs को हमें simple past tense में बना करके और कौन सा suitable रहेगा किस sentence के लिए वहाँ पर fill करना है. First sentence is My mother dashed Mrs. Verma in the market. तो यहाँ पर होगा met. My mother met. Met is a past form of meet. Meet का ये past form है.
met. My mother met Mrs. Verma in the market. Next, she dashed us about the new book she had read. She dashed us about the new book she had read. So here we will write told. She told us about the new book she had read. And told is the past form of the word tell. ये tell का past form है told. They dashed late to school today. They dashed late to school today. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Came. They came late to school today. Came is the past form of come. ये come का second form है, past form है. We dash alms to the poor and the needy. Alms means bhiksha. So here we will write give. We give alms to the poor and the needy. Give is the past form of give. Vani dashed this book yesterday. Vani bought this book yesterday. Bought. We will write bought. Bought is the past form of buy. B-U-Y. Buy का ये past form है. When my team lost, I dashed sad. So here we will write was. When my team lost, I was sad. यहाँ पर बॉक्स में was कहीं दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है be. be में हम is, am, are, was, were का यूज करते हैं. अगर प्रेजेंट टेंस है तो is, am, are, पास्ट है तो was और were. यहाँ पर हम लिखेंगे when my team lost I was sad. The cat dashed by the window. The cat sat by the window and sat is the past form of sit. Last, my mother dashed history in my school. Here it can be taught. My mother taught history in my school. Taught is the past form of teach. ये जो ब्लैंक्स में हमने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे जो बॉक्स में वर्ब्स हैं उनके सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है ये. Rewrite the passage. Change the highlighted verbs to the simple past tense. ये जो पैसेज दिए गए हैं स्टूडेंट्स इन्हें आपको फिर से लिखना है. जब आप इसे दोबारा लिखेंगे जो हाईलाइटेड वर्ब्स हैं उन्हें आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना होगा. इस पैसेज को दोबारा लिखते समय जो वर्ब्स दिए गए हैं बोल्ड है उन्हें हमें चेंज करना होगा सिंपल पास्ट टेंस में. लाइक वेक, तो वेक का क्या हो जाएगा वोक. WOKE वोक. डू, डिड, टेक, टुक. लाइक दिस यू हैव टू चेंज the highlighted verbs to the simple past tense. Every day I wake up at 6 a.m. I do yoga. Then I take a shower. And get ready for school. I eat breakfast and wait for the school bus. My friends greet me when I get into the bus. We talk during our journey and reach our school gate at 8 a.m. We enter our classrooms, keep our bags and then leave for the assembly. We say our prayers and return to our classrooms afterwards. तो ये जो verbs दिए गए हैं जो बोल्ड हैं ये सारे प्रेजेंट टेंस में हैं. ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं जिसे हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के 3 फॉर्म्स हमने पढ़े थे तो उसे आप लर्न करिए और इन वर्ब्स को आप चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. इट इज़ योर होमवर्क. Find verbs from the word grid. They are the simple past tense forms of the given verbs. आपको जो वर्ड्स लिखे गए हैं पहले से उनका सेकेंड फॉर्म उनका सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म इस ग्रिड में से फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वर्ड है टेक, फील, रन, हिट, कैच, विन, लूज, कट. तो इन सारे वर्ब्स के आपको सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स मेन सेकेंड फॉर्म फाइंड आउट करके
वहाँ पर लिखना है।